He, Chief Justice of Pakistan Sajjad Ali Shah, did not understand the practical limitations to his power. Hamid Khan, A History of the Judiciary in Pakistan. Pakistan was already in the midst of a state and societal implosion as a consequence of economic, political, security and narrative chaos, i.e. a state of total confusion regarding even the basic factual narratives/truths as exemplified by the dangerously wild and unproven public allegations against various state institutions, politicians, judges, military chiefs, intelligence officials, etc. Now adding to this four-headed monstrous chaos is the rapid development of constitutional chaos and judicial chaos. The constitutional chaos has been caused by the PDM government, state officials and institutions such as the Election Commission, for example, by openly defying the clear constitutional provisions to hold the Punjab Assembly and KP Assembly elections within 90 days of their dissolution. This is not a mere crisis, but constitutional chaos, because a country which cannot even hold timely elections nullifies the very essence of democracy and constitutionalism. However, the most dangerous of these various forms of chaos is judicial chaos, which is evident from the Cold War, and now virtual civil war, between the Chief Justice of Pakistan and other, dissenting judges of the SC. It is not merely a judicial crisis but judicial chaos, when nearly half the judges of the SC openly criticize the CJP through judicial orders, or when the CJP is reluctant to constitute a full court because of the fear of judicial dissent against him, and as a result, a sitting government openly defies the implementation of SC orders by relying on the divide in court. Judicial chaos is evident from the Cold War, and now virtual civil war, between the judges. Where do we go from here? Historical amnesia. As Karl Marx rightly said, history repeats itself, first as a tragedy, second as a farce. The judicial anarchy of 2023 has a chilling similarity to the judicial anarchy of 1997, under CJP Sajjad Ali Shah, but as the judicial events of 2023 also show, history has repeated itself in 2023 as a tragedy and a farce simultaneously. The current public discourse has highlighted the similarity with 1997, an SC divided into CJP-led judges and dissenting judges. The main difference among these judges is about the CJP's power to arbitrarily constitute benches to hear cases and the assignment of politically sensitive and constitutionally important cases to a specified bench of judges, the demand for a full court meeting by dissenting judges, aggressive speeches against judges in Parliament amending the law to provide an appeal to a larger bench of the Supreme Court, especially relevant in politically sensitive cases, rival orders by different SC benches nullifying each other's proceedings, and talk of misconduct references against SC judges. Therefore, there is a 1997 déjà vu in the judicial anarchy of 2023, but there are critical differences between the two judicial anarchies. Firstly, CJP Sajjad Ali Shah in 1997 was opposed by a very powerful political executive and a powerful parliament, with the government having a two-thirds majority in the National Assembly, with a weak opposition and an indecisive military establishment. In 2023, there is a weak coalition government, a questionable and incomplete parliament, a powerful military establishment and a very strong popular mobilized opposition against the government. In short, the current government cannot impose its solution by exploiting the divisions among judges and attacking the SC and resultantly, forcing the CJP to resign. Secondly, unlike 1997, Pakistan is currently imploding under the simultaneously occurring four forms of chaos mentioned above. Unlike the relative stability of 1997, time is running out to save the country from the implosion of anarchy in 2023. Therefore, the outcome of the judicial anarchy of 2023 will not be the same as that of the judicial anarchy of 1997, but perhaps much more disastrous. Sadly, there is historical amnesia among the judges who appear to think that they can somehow defy a repeat of the judicial anarchy of 1997 while taking similar anarchic actions in 2023. Disastrous outcomes. In the next few months, this judicial anarchy might reach its zenith. If the Supreme Court, Practice and Procedure Act, 2023,
which provides for the constitution of benches by a committee comprising the CJP and 2 senior judges and provides an appeal against the orders under Article 184(3) to a larger bench, is not implemented or is judicially suspended, then the present dissenting judges may consider not sitting on the benches or further rival orders may be passed by judges against each other, leading to the existence of virtually 2 SCs. Also, the sort of complaints of judicial misconduct or audio leaks against judges might be used to harass some judges. This might lead to 2 possibly disastrous outcomes. One group of judges will prevail over the other, not because they are necessarily constitutionally correct, but because they implemented a better strategy to prevail over their fellow judges. Sadly, judges will be reduced to playing strategic games. Or, unlike 1997, there will be a complete deadlock between the CJP and the dissenting judges with the danger of civil unrest, but with the government and parliament being too weak to resolve this issue. This will pave the way for direct or indirect intervention by the deep state, like the one by Coas Ishfaq Kayani for the restoration of judges in 2009, to resolve this deadlock but with unforeseen consequences for constitutional democracy and judicial independence in Pakistan. Can this judicial anarchy be prevented now? The buck stops with CJP Umar Atabandial as he has the ultimate power and responsibility to save the SC from this anarchy. The solution is simple: call a full court administrative meeting to discuss and resolve the key disputes regarding the constitution of benches and the fixation of political and important constitutional cases before benches which are non-controversial. Furthermore, fix all judicial cases arising out of the KP Assembly and Punjab Assembly election disputes before a full court. Will this happen? Sadly, recent judicial events show that such a consensus-based solution is unlikely to be adopted. But, as the philosopher Walter Benjamin said, it is only for those without hope that hope is given. The writer is a lawyer. Published in Dawn, April 10, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह अपने इख्तियारात की अमली हुदूद को नहीं समझते थे। हामिद खान, पाकिस्तान में अदलिया की तारीख। पाकिस्तान पहले ही माशी, सियासी, सलामती और बयानिया अफरा-तफरी के नतीजे में एक रियासती और मुआशरती बहरान का शिकार था, यानी बुनियादी हक़ाइक़/सच्चाइयों के बारे में मुकम्मल उलझन की हालत, जिसकी मिसाल मुख्तलिफ रियासती इदारों, सियासतदानों, जजों, फौजी सरबराहों, इंटेलिजेंस अफसरान वगैरह के खिलाफ खतरनाक तौर पर बेबुनियाद और गैर साबित शुदा अवामी इल्ज़ामात हैं। अब इस 4 सरों पर मुश्तमिल खौफनाक अफरा-तफरी में इजाफा आईनी अफरा-तफरी और अदालती अफरा-तफरी का तेजी से बढ़ना है। मिसाल के तौर पर PDM हुकूमत, रियासती हुक्काम और इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों ने पंजाब असेंबली और KP असेंबली के इंतखाबात तहलील होने के 90 दिन के अंदर कराने की वाज़े आईनी शक्कों की खुला खिलाफ वर्जी करके आईनी अफरा-तफरी पैदा की है। ये महज बहरान नहीं बल्कि आईनी अफरा-तफरी है, क्योंकि जो मुल्क बर वक्त इंतखाबात नहीं करवा सकता वो जमहूरियत और आइन पसंदी के जौहर को ख़त्म कर देता है। ताहम अफरा-तफरी की इन मुख्तलिफ शक्लों में सबसे ख़तरनाक अदालती अफरा-तफरी है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के दीगर इख्तिलाफी जजों के दरमियान सर्द जंग और अब मजाजी खाना जंगी से वाज़े है। ये महज अदालती बहरान नहीं बल्कि अदालती अफरा-तफरी है, जब सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन आधे जज अदालती अहकामात के जरिए चीफ जस्टिस को खुलेआम तनकीद का निशाना बनाते हैं, या जब चीफ जस्टिस अपने खिलाफ अदालती इख्तिलाफ के खौफ से फुल कोर्ट बनाने से हिचकिचाते हैं और उसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत अदालत में तकसीम पर इन्हिसार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की खुला खिलाफ वर्जी करती है। अदालती अफरा-तफरी जजों के दरमियान सर्द जंग और अब मजाजी खाना जंगी से वाज़े है। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? जैसा कि कार्ल मार्क्स ने सही कहा था, तारीख अपने आप को दोहराती है, पहले एक अलमिया के तौर पर, दूसरा एक तमाशे के तौर पर।
चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में 2023 के अदालती इंतशार में 1997 के अदालती इंतशार से गहरी मुमासलत है, लेकिन जैसा कि 2023 के अदालती वाक़यात से भी जाहिर होता है कि तारीख ने 2023 में खुद को एक अलमिया और एक तमाशे के तौर पर दोहराया है। मौजूदा अवामी बहस ने 1997 के साथ मुमासलत को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस की सरबराही में जजों और इख्तिलाफ राय रखने वाले जजों में तकसीम किया गया था। इन जजों के दरमियान बुनियादी फ़र्क यह है कि चीफ जस्टिस को मुकदमात की समाअत के लिए मनमाने तौर पर बेंच तश्कील देने का इख्तियार है और सियासी तौर पर हसास और आईनी तौर पर अहम मुकदमात को जजों के एक मखसूस बेंच को तफवीज़ किया गया है। इख्तिलाफ राय रखने वाले जजों की तरफ से फुल कोर्ट मीटिंग का मुतालबा, पार्लियामेंट में जजों के खिलाफ जारहाना तकारीर। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े बेंच को अपील फराहम करने के लिए कानून में तरमीम की, खास तौर पर सियासी तौर पर हसास मुकदमात में मुतालिका। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचों की जानिब से एक दूसरे की कार्रवाई को कालादम करार देने के मुतहारिब अहकामात और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ बदसलूकी के रेफरेंसेस की बात करते हैं। लिहाजा 2023 के अदालती अनारकी में 1997 अशारिया का फ़र्क है, लेकिन दोनों अदालती अनारकियों के दरमियान अहम इख्तिलाफात मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि 1997 में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की मुखालफत एक इंतहाई ताकतवर सियासी एग्जीक्यूटिव और एक ताकतवर पार्लियामेंट, जिसमें हुकूमत के पास कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत थी, इन्हें की थी, जिसमें कमज़ोर अपोजिशन और गैर फैसला कुन फौजी स्टेब्लिशमेंट थी। 2023 अशारिया में एक कमज़ोर मखलूत हुकूमत, एक मशकूक और नामुकम्मल पार्लियामेंट, एक ताकतवर फौजी स्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ एक बहुत मजबूत अवामी मुतहर्रिक अपोजिशन है। मुख्तसर ये कि मौजूदा हुकूमत जजों के दरमियान तकसीम का फ़ायदा उठाकर और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके और उसके नतीजे में चीफ जस्टिस को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर करके अपना हल मुसल्लत नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि 1997 अशारिया के बरक्स पाकिस्तान इस वक्त बैक वक्त 4 किस्म की अफरा तफरी का शिकार है। 1997 के निस्बतन इस्तेहकाम के बरक्स 2023 में मुल्क को इंतशार से बचाने का वक्त ख़त्म होता जा रहा है। लिहाजा 2023 के अदालती इंतशार का नतीजा 1997 के अदालती इंतशार जैसा नहीं, बल्कि शायद इससे कहीं ज़्यादा तबाहकुन होगा। अफसोस की बात यह है कि जजों में तारीखी याददाश्त मौजूद है जो ये सोचते हैं कि वो 2023 में भी इसी तरह के अनारकी इक़दामात करते हुए 1997 के अदालती अनारकी के इआदा को किसी तरह रोक सकते हैं। तबाहकुन नताइज अगले चंद महीनों में यह अदालती इंतशार अपने उरूज पर पहुंच सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजों पर मुश्तमिल एक कमेटी के जरिए बेंचों की तश्कील का एहतमाम किया गया है और आर्टिकल 184(3) के तहत अहकामात के खिलाफ लार्जर बेंच को अपील फराहम की गई है, पर अमल दरामद नहीं किया जाता है या अदालती तौर पर मुअत्तल कर दिया जाता है, तो मौजूदा इख्तिलाफी जज बेंचों पर न बैठने पर गौर कर सकते हैं या जजों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मजीद मुतजाद अहकामात जारी किए जा सकते हैं। अमली तौर पर 2 SC के वजूद की तरफ ले जाता है। इसके अलावा जजों के खिलाफ अदालती बदसलूकी ऑडियो लेक्स की शिकायत की तलवार कुछ जजों को हरासा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इससे 2 मुमकिना तौर पर तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। जजों का एक गिरोह दूसरे पर गालिब आएगा, इसलिए नहीं कि वो आईनी तौर पर दुरुस्त हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने साथी जजों पर गालिब आने के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाई। अफसोस की बात यह है कि जजों को स्ट्रेटेजिक गेम्स खेलने तक महदूद कर दिया जाएगा। अब फिर 1997 के बरक्स चीफ जस्टिस और इख्तिलाफ राय रखने वाले जजों के दरमियान मुकम्मल डेडलॉक हो जाएगा, जिससे शहरी बदअमनी का खतरा होगा, लेकिन हुकूमत और पार्लियामेंट इस मसले को हल करने के लिए बहुत कमज़ोर हैं। इससे इस तातुल को हल करने के लिए गहरी रियासत की तरफ से बराह रास्त बिलवास्ता मुदाखलत की राह हमवार होगी, जैसा कि 2009 में जजों की बहाली के लिए आर्मी चीफ अशफाक कयानी की तरफ से किया गया था, लेकिन इसके पाकिस्तान में आईनी जमहूरियत और अदालती आज़ादी पर गैर मुतवक्के नताइज मुरतब होंगे। क्या अब इस अदालती इंतशार को रोका जा सकता है? यह जिम्मेदारी चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल पर आयद होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस अनारकी से बचाने का हतमी इख्तियार और जिम्मेदारी उनके पास है। इसका हल सादा है,
बेंचों की तश्कील और गैर मुतनाज़ा बेंचों के सामने सियासी और अहम आइनी मुकदमात के तयन से मुताल्लिक़ अहम तनाज़ात पर तबादला ख्याल और हल करने के लिए एक फुल कोर्ट इंतज़ामी इजलास तलब करे। मज़ीद बरा कि पी असेंबली और पंजाब असेंबली के इंतखाबी तनाज़ात से पैदा होने वाले तमाम अदालती मुकदमात को फुल कोर्ट के सामने तय करे। क्या ऐसा होगा? अफसोस की बात यह है कि हालिया अदालती वाक़यात से ज़ाहिर होता है कि इत्तफ़ाक़ राय पर मबनी इस तरह के हल को इख्तियार करने का इम्कान नहीं। लेकिन जैसा कि फ़लसफ़ी वाल्टर बेंजामिन ने कहा था कि उम्मीद सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास उम्मीद नहीं है। मज़मून निगार एक वकील हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 10 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.